हाय गाइस, आई एम एडवोकेट अर्जुन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इजी टेक्निक शेयर करूंगा लीगल रीजनिंग को सॉल्व करने की। उसके लिए हम लोग क्लैट 2022 का लीगल रीजनिंग सेक्शन वहां से हम प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप लीगल रीजनिंग सेक्शन, पहली बात तो सबसे पहले आप लीगल रीजनिंग सेक्शन से ही शुरू कीजिए अपना पेपर, जो क्लैट का एग्जाम। तो पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स। ये मैंडमस की रिट की बात होगी। रिट इज अ पब्लिक लॉ रेमेडी. इट रेफर्स टू अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर issued by a judicial authority directing an individual or authority to do or refrain from doing an act. The High Court, while exercising its power of judicial review, does not act as an appellate body. It is concerned with illegality, irrationality, and procedural impropriety of an order passed by the state or statutory authority. A High Court is empowered to issue directions, orders, or writs for the enforcement of fundamental rights and for any other purpose. The writ jurisdiction of High Court is discretionary and equitable. Writ of mandamus is issued by a court commanding a public authority to perform a public duty belonging to its office. It can be issued only when a legal duty is imposed on the authority and the petitioner has right to compel the performance of such duty. Writ of mandamus is requested to be issued inter alia to compel performance of public duties which may be administrative, ministerial, or statutory in nature. A writ of mandamus may be issued in favor of a person who establishes a legal right in himself. It may be issued against a person who has a mandatory legal duty to perform but has failed or has neglected to do so. Such a legal duty emanates by operation of law. The writ of mandamus is most extensive in regards to its remedial nature. The object of mandamus is to prevent disorder emanating from failure of justice and is required to be granted in all cases where law has established no specific remedy. सबसे पहली चीज आपने ये याद रखना है कि प्रिंसिपल इज ऑलवेज राइट. इट इज बाइबल फॉर यू. ये आपका कोर्ट है, इसके अंदर ही आपने खेलना. तो जो प्रिंसिपल ने कहा है, अपनी प्रायर लीगल नॉलेज या कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस लॉ को लेके या कोई भी कॉमन सेंस को यूज मत करो. प्रिंसिपल में जो लिखा है वही सब राइट है. उसी बेस पे आपने आंसर की ऑप्शंस को ढूंढना है. तो पहला वाला रिट मैंडमस रिट जुरिस्डिक्शन से ये आया क्वेश्चन. और फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं. जब आपने पढ़ लिया, एक आइडिया हो गया कि मैंडमस की रिट के बारे में बात हो रही है, पब्लिक लॉ रेमेडी है. किसी की कोई पब्लिक ड्यूटी बनती है, किसी अथॉरिटी की, पब्लिक अथॉरिटी की, और वो ड्यूटी निग्लेक्ट कर दी, उसने कंप्लाई नहीं की, उसके लिए ये मैंडमस रिट हाई कोर्ट से आप इशू करवा सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट made a rule to make it discretionary to grant dearness allowance to its employees. One of the employees filed a writ petition seeking a mandamus to compel the government to grant dearness allowance in the given situation. Which of the following statements is true? सबसे पहले तो क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है. मेक इट डिस्क्रिशनरी, और जो यहाँ प्रिंसिपल में डिस्क्रिशनरी है वो कुछ और बोल रहा है. यहाँ डिस्क्रिशनरी वर्ड कहीं किसी और सेंस में यूज कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने एक रूल बनाया है, यहां पे मैंडमस की तो बात ही नहीं कर रहे. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप पढ़ें क्वेश्चन को तो आप एलिमिनेशन का रूल भी यूज कर सकते हैं. आपको जब पता है कि यहाँ पे अगर आंसर सपोज कैन नॉट में है तो कैन वाले तो पहले ही डिलीट हो जाएंगे. सो इसका राइट आंसर ये रहेगा कि रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड. ए ऑप्शन है, रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड as no legal duty was imposed on the government to grant dearness allowance. ये इसका राइट आंसर है. यहां मैंडमस की बात ही नहीं है. सो 66 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन. देन 67 देखिए. A public spirited citizen filed a writ petition seeking a mandamus to compel the government to make a law to curb the ill effects of climate change. In the given situation, which of the following statement is true? First option है, writ of mandamus can be granted as it is an equitable remedy.
Second option, writ of mandamus cannot be granted as no legal duty is imposed on the government to pass a law to curb the ill effects of climate change. तो ये B आंसर राइट आंसर है. नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं. writ of mandamus can be granted, ये नहीं हो सकता. writ of mandamus cannot be granted as there is no violation of fundamental right. बात ही कहीं और चली गई. तो B is the right option, क्योंकि पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन ने रिट फाइल की है, सीख कर रहा है मैंडमस के कोई ड्यूटी परफॉर्म करो जो लॉ ने आपको दी है. यहां तो वो कह रहे हैं लॉ को मेक करो, तो आप समझ ही गए होंगे कि आंसर बी क्यों. देन नेक्स्ट इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. अपॉन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस बाय मिस्टर ए, Mr. B filed a writ petition seeking a mandamus to compel Mr. A to perform his obligations under the contract. In the given situation, which of the following statements is true? यहाँ पे आंसर आपका C रहेगा वैसे, बट हम सारों को पढ़ लें. Writ of mandamus can be granted as it is a discretionary remedy. Writ of mandamus cannot be granted as there is no violation of fundamental right. Writ of mandamus cannot be granted as Mr. B's right under the contract is a private right. Writ of mandamus can be granted as there is no statutory imposed on Mr. A to fulfill his contractual obligations. तो यहाँ पे आंसर C is the right answer because it is a private right और पूरा मैच कर रहा है प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल में वर्ड्स पब्लिक ड्यूटी यूज हुआ. नेक्स्ट पे चलते हैं. A licensing officer is under a statutory duty to issue a license to an applicant who fulfills the condition prescribed for the issue of such license. Mr. X, an applicant, fulfilled all the conditions prescribed for the issue of such license, but his application for issuance of license was rejected by the licensing officer. In the given situation, which of the following statements is correct? यहाँ पे mandamus यूज होती है बिकॉज एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है लाइसेंसिंग ऑफिसर पे लाइसेंस इशू करना, अगर एप्लीकेंट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई हुई हैं. तो यहाँ पे क्या आंसर आप लोगों को लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए? लेट्स स्टडी द ऑप्शंस. रिट ऑफ मैंडमस कैन बी ग्रांटेड कंपेलिंग द लाइसेंस ऑफिसर टू इशू द लाइसेंस. Writ of mandamus cannot be granted compelling the license officer to issue the license as there is no violation of fundamental right. Writ of mandamus can be granted as it is discretion of the licensing officer to grant license. Writ of mandamus cannot be granted compelling the license officer to issue the license as there is no violation of public duty. आप लोगों को आंसर पता ही लग गया होगा, प्रिंसिपल में ही रहिएगा, प्रिंसिपल से बाहर नहीं जाना. तो आंसर ऑप्शन है जो हमारी, दैट इज ए. Writ of mandamus can be granted compelling the license officer to issue the license. क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर रहना है, इसलिए ये आपका राइट आंसर है. अब अगर आपकी कॉमन सेंस जाग जाए तो आप लोग कहेंगे क्या पता एप्लीकेंट में कोई ना कोई रीजन दे दिया वो लाइसेंसिंग ऑफिसर ने कि ये क्यों नहीं हो सकता. बट यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहा है कि एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है एक पब्लिक ऑफिस की कि विद इन दी पार्स जो चीज उसकी ड्यूटी जो भी बनती है वो पूरी करे. तो यहाँ पे आपकी मैंडमस इशू हो सकती है. नेक्स्ट, which of the following statements is incorrect? Writ of mandamus may be issued in favor of a person who establishes the existence of a legal right. Which of the following statements is incorrect? Writ of mandamus may be issued against a person or authority who has a mandatory duty to perform but has failed or neglected to do so. Writ of mandamus is purported to prevent disorder emanating from failure of justice. Writ of mandamus may be requested to be issued to compel performance of private duties which may be administrative, ministerial or statutory in nature. तो इसका right answer है D. हम प्रिंसिपल के अंदर ही रह रहे हैं, प्रिंसिपल में ही आंसर. सो 70 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी. The next principle, to maintain the secular character of the Indian polity, not only does the Constitution of India guarantee freedom of religion, the Article 25 to 28 Constitution की बात हो रही है,
right to religion, fundamental right to individuals and groups, but it is also against the general policy of the Constitution of India that any money be paid out of the public funds for promoting or maintaining any particular religion. Accordingly, it is provided in the Constitution of India that no person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. This does not prohibit the state from enacting a law to incur expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination, but by such law, no person can be compelled to pay any tax, the proceeds of which are to be so utilized. This, however, does not invalidate levy of a fee to provide some service. Thus, a fee can be levied on pilgrims to a religious fair to meet the expenses of the measures taken to safeguard the health, safety, and welfare of pilgrims. Such fee levied by a state will be valid because the object of such contribution is not to foster or preserve religion, but to control secular administration of religious institutions. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस नहीं ले सकते, बट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ और उनका सेफगार्ड जो पिलग्रिम्स हैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के, उनकी वेलफेयर के लिए आप एक स्टैट्यूटरी फी जरूर ले सकते हैं. सिंपल प्रिंसिपल, बहुत सिंपल आंसर प्रिंसिपल के अंदर ही आप कोशिश करेंगे तो आप हर आंसर को बड़ा इजीली दे पाएंगे. तो सबसे पहले कहता है मिस्टर ए, अ टैक्स पेयर ऑफ वेरियस टैक्सेस levied by state government filed a writ petition for issuance of writ of mandamus directing the state to forbear from spending any amount from the public funds of the state for renovation of water tanks belonging to a Hindu temple in the state. These tanks were used by general public irrespective of their religious affiliation for bathing and drinking purposes. In the given situation, which of the following statements is correct? Answer principle में इसका आंसर बहुत इजी है. एलिमिनेट कर सकते हैं आप ऑप्शंस को जब आपको पता है कि आंसर इज में होगा या कैन नॉट में होगा, यस या नो में होगा. स्टेट इज प्रमोटिंग और मेंटेनिंग द हिंदू रिलीजन. स्टेट कैन नॉट बी सेड टू बी प्रमोटिंग और मेंटेनिंग द हिंदू रिलीजन. State is compelling citizens to pay tax for promotion of Hindu religion. The state is compelling citizens to pay tax for maintenance of Hindu religion. आप बताइए आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका राइट आंसर है बी. स्टेट कैन नॉट बी सेड टू बी प्रमोटिंग और मेंटेनिंग द हिंदू रिलीजन बिकॉज एक सेफ गार्डिंग और वेलफेयर की बात हो रही है. नेक्स्ट, communal rights between religion A and religion B resulted in destruction of places of worship of both the religions in the state. As a result, state government utilized public funds for restoring the places of worship of both the religions A and B. In the given situation, which of the following is correct? यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर रीजन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जो तोड़फोड़ हुई है उसे ठीक करा जा रहा है. तो the state government's act is violative of Constitution of India as it is promoting or maintaining particular religion. The state government's act is not violative of Constitution of India as it is not promoting or maintaining any particular religion. The state's act is violative of freedom of religion as it condones communal violence. एक बात कहीं और चलेगी. The state government's act is not violative of Constitution of India as it is promoting or maintaining a particular religion. तो जो right answer रहेगा इसका, that is B answer. The state government's act is not violative of Constitution of India as it is not promoting or maintaining any particular religion. तो friends, बहुत सिंपल है लीगल रीजनिंग और बहुत स्कोरिंग है. जस्ट आपको मैं एक आइडिया देना चाहता था, आगे भी इसके बारे में बात करते रहेंगे. तो टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रिंसिपल के अंदर ही रहिए. आंसर प्रिंसिपल के बीच में ही है. अपनी कॉमन सेंस छोड़ दो, जो प्रिंसिपल ने कह दिया उस स्टैंड पे रह के, अगर आपको लगता है कि हाँ ऑप्शंस में चीजें बिल्कुल प्रिंसिपल के साथ मैच कर रही हैं तो दैट वुड बी योर आंसर. थैंक यू सो मच.